Now students, here question number 4. In this question, examining the table, each figure is divided into triangle and the sum of the angle deduced form that. Now here few figures. First figure is triangle. This is a triangle. One more figure. This is a quadrilateral. One more figure. This is pentagon. And one more hexagon. Number of side. Here is 3. Here is 4. Here is 5. And this is 6. Angle sum property. In this 180 degree angle sum 180 degree. Here divided it into two triangle 180. That means to say 2 into 180. Here in pentagon, two diagonals divided it into three triangles. So this is 3 into 180. Now next one is a hexagon. Here is a 4 triangles. So 4 into 180. This is angle sum. Angle sum of triangle is 180 degree. Angle sum of quadrilateral is 360 degree. Angle sum of pentagon. Angle sum of hexagon. According to this theory, one pattern here again, number of side minus 2 into 180 degree. Number of side, here is the 3 minus 2 into 180 degree. Here 4 minus 2 into 180 degree. And here 5 minus 2 into 180 degree. And here 6 minus 2 into 180 degree. So a pattern n minus 2 total angle sum of polygon is equal to n minus 2 into 180 degree. So students, is this in this theory? Now here is a few problems. What can you say about the angle of the sum of convex polygon with number of sides are given? A is equal to 7. If A is equal to 7, B is equal to 8, and C is equal to 10, and D is equal to N. Now, if a polygon have a side, number of side is 7. One more query, Preet Arora, ask your question. Master Preet Arora, ask your question. सर वहाँ पे जो आपने वो ट्रायंगल बनाया उसके नीचे साइड लिखिए, साइड के नीचे एंगल ऑफ साइड। हाँ, एंगल सर उसके नीचे आपके पास 180 के नीचे क्या लिखा है? हाँ बेटा, 180 के नीचे क्या लिखा है? 180 that is equal to, here आप ऐसे एक सिंबल बना देना, ये दोनों बराबर है। ठीक है सर। ठीक है, if a sides of a polygon is 7, so A is equal to 7, so angle sum of polygon is equal to 7 minus 2 into 180 degree.
because number of side is 7. So 7 minus 2 is equal to 180 degree. Here 5 into 180 degree, that is equal to 900 degree. So angle sum of polygon which has a 7 side. Name of polygon is first triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon. Okay, so this polygon is a heptagon. Now next one is 8. B portion is your homework. B is your homework. And C portion. Portion C, number of side is 10. So angle sum of this polygon, angle sum of polygon is equal to 10 minus 2 into 180 degree. If where 10 is a number of side of the polygon, this is the side of polygon, we subtract 2 from this side and multiply it into 180. This is the angle sum we get here, that is equal to 8 into 180 degree. 8 into 180 degree. So this is 144. Just put 0 here, and this is the angle sum. And now next one is D. If the number of side of polygon is n, so n minus 2 into 180 degree. This is the n minus 2 into 180 degree. This is the angle sum property. Now students, next question number 5. Using this pattern to find if any number of sides of polygon, then you get a angle sum of the polygon. Aditya girl, ask your question. सर मैं पूछा था जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 के, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं सर, अच्छा यही वाला है सर, डी वाला जो है इसमें n-2 क्या लिखा है? n-2 into 180 degree. Here total angle sum of polygon n-2 into 180 degree. Here the 6 number of side 6 minus 2, 5 number of side 5 minus 2, 4 number of side 4 minus 2, 3 number of side 3 minus 2. So if number of side is n, the angle sum is n-2 into 180. Is that clear? Okay. Now one more query. Harshit 8B, ask your question. Harshit, ask your question. नो सर हो गया No sir, हो गया. Okay sir. Master Dhruv Rajput, ask your question. सर क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से बता दीजिए. Question number 4 repeat करना. Okay. Now students, here is a few polygon, and using this pattern to find the angle sum of any polygon. If number of side, this polygon is named triangle, 3 side. This polygon have a 4 side. This polygon have a 5 side. This polygon have a 6 side. So if we want to find the angle sum of the triangle, that is 3. So 3 minus 2 into 180, that is a 180. And if the number of side is 4, so 4 minus 2 into 180, that is equal to 360 degree. Number of side 5, 5 minus 2, number of side 6 minus 2, 180. So we have to find number of side 7, 8, 10 and n. So if the number of side is 7, so 7 minus 2 into 180, get 900. B portion is your homework, and C portion number of side is 10. So 10 minus 2 into 180, that is equal to 8 into 180, 1440 degree. This is the angle sum. If number of side in algebraic form, that is the n. So here n minus 2 into 180, this is the angle sum, is equal to angle sum of polygon. Okay. सर सभी के अंदर से दो ही Yes, subtract 2 from the number of the side and multiply
by 180. Okay. Okay, sir. Next query, Preet Arora, ask your question. सर आपने यहाँ पे D लिखा है, वहाँ पे आपने माइनस n क्यों लिखा है? सिर्फ वो तो n है ना Where minus n? सर? D इधर This is यहाँ not a minus sign. Dash. ओके सर। Okay. Any query? Aditya Garg? हो गए? Okay. Now students, question number 5. In this question, what is the regular polygon? State the name of a regular polygon of. The definition of regular polygon is if a polygon is equiangular and equilateral. Equiangular, that means to say each angle of polynomial will be equal. Equilateral, that means to say each side of polygon will be equal. So the state the name of the regular polygon. Regular polygon have a 3 side. If 3 side, name equilateral triangle. If the 3 side, the name of the regular polygon of 3 side, that is an equilateral triangle. Okay. Now next one is if a regular polygon have a 4 side, the name of regular polygon is square. And if the number of the side is 6 side, the name of regular polygon is hexagon. Regular hexagon. Is that clear? If number of side is 3, equilateral triangle. If the number of side is 4, name regular polygon is square. If the number of side is 6, that name is regular hexagon. Is that clear? Okay, so question number 5 is also homework. Now, question number 7. Sorry, that means 6th question. In this question, find all angle measure x in the following figure. Okay. Now, the first portion of here this figure. This is the one side, one more side. Here is one more side, and this is a quadrilateral. Okay. In the quadrilateral, the name angle measurement 50, 130. This is 50. This is 130, and one more angle that is 120 degree, and next one is x. यहाँ लिखेंगे angle sum of quadrilateral is equal to 360 degree. Angle sum of quadrilateral is 360 degree. So first angle is 50, second angle is 130, third angle is 120, and fourth angle is x, that is equal to 360 degree. Okay, now here a few problem. Master Vikas Gangwar, ask your question. सर ये जो 50 डिग्री के नीचे सर 130 डिग्री लिखा है. Yes, this is 50, this is 130, this is 120, this is x. Okay. Yes, sir. So Yes, sir. one more query, Master Aditya Garg, ask your question. सर x is equals to 60 आंसर आएगा. Okay, you are so intelligent. Now here 180 plus 120 plus x is equal to 360 degree, and now 0, 0, 300 plus x is equal to 360 degree. Again x equal to 360 minus 300, that is equal to 60 degree. You are absolutely right. Okay, student. Now the next portion, B portion. Here in this portion, one a straight line and one perpendicular line. One straight line, one perpendicular line. Here is the one more line and join to this. Okay, this is a here a symbol like square,
and here is x, and here is 70, and here 60. We have to find the value of x. So where this square symbol, if the angle represented by this square symbol, this angle measurement is 90 degree. Query, Vikas Gangwar, ask your question. नो सर सर वो पहले का रीजन तो आपका हैंड्स अप है, हैंड्स डाउन करें. एंड आदित्य गार्ग, योर हैंड्स अप. सर x जैसे x है तो x के और एंगल्स कौन से हैं सर, दिखाई नहीं दे रहा सही से. हाँ, yes, this angle is x, this angle is 70, this angle is 70, 7. and this angle is 60. Is that clear? ओके सर. Now, ओके सर. so if angle represented by a square, this is the square, this measurement is 90 degree, this is 90 degree, this is 90 degree. So by angle sum property of quadrilateral is equal to x plus 70 plus 60 plus 90 is equal to 360 degree. Okay, now students, here x, सर 140 डिग्री. yes, now let us take 130 plus 90 is equal to 360, and x plus 0 220 is equal to 360, x equal to 360 minus 220, that is equal to 0 4 140 degree. Yes, you are absolutely right. Okay, now students, we have one more question. This is a figure, the book part, third part. In this figure represented, this is this line, and here is this, and draw one more line, and get the first angle is, this angle is 70, and here this angle is 60. Now students, these two angles measurement are same. This is x, this is x, and the uppermost angle, that is a 30 degree. Now students, in the figure using first linear pair. Okay, linear pair. Yes, sir. If the exterior angle of linear pair, this is the exterior angle 70 degree, then the interior angle is equal to interior टू angle. लिखा है क्या? Want to find the interior angle, then we subtract exterior angle from 180 degree. So 180 minus 70, that is equal to 110 by linear pair, that is equal to 70 plus ये angle interior. सर इसका 140 होगा सर ना. वहां पे 2 लिखा है क्या? Yes. Interior is equal to 180 minus 70. That is equal to 110. This interior angle 110. Now again, if the exterior angle is 60 degree, so interior angle here. Now again 60 plus interior angle is equal to 180 degree. So interior is equal to 180 minus 60, that is equal to 120 degree. This is 120 degree. Here, this is a polygon. This polygon's name is this in this polygon, first, second, third, fourth, fifth side. This is a pentagon. Pentagon में आपके पास जो है how many the total measurement of interior angles are in pentagon is equal to
पेंटागन के सभी एंगल्स का मेजरमेंट कितना होता है? यस स्टूडेंट, in the pentagon 540 the angle sum property of pentagon that is equal to 540 degree. So here 30 plus x plus 110 plus 120 plus x equal to 540 degree. Here 120 plus 30 that is a 150. 150 plus 110 plus x 2x equal to 540 degree. Now here 0 6 260 plus 2x equal to 540 degree, and now here 2x is equal to 540 minus 260 degree. 2x equal to 0. Here a 280 x equal to 280 by 2 that is equal to 140 degree. Okay, the value of x is equal to 100 here 40 degree. Okay students, one query master Priyanshu Joshi A3 ask your question beta. Priyanshu Joshi सर ये क्वेश्चन एक और बार समझा दो। एक और बार। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सिंपल लैंग्वेज एक्सटीरियर इंटीरियर दिस इज द लीनियर पेयर। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों को प्लस करने पर 180 आता है। बाहर 70 है तो अंदर 110 हो जाएगा, बाहर 60 है तो अंदर 120 हो जाएगा। These two angles are equal. Upper angle is 30 degree. This polygon is a pentagon. This polygon is a pentagon. In pentagon, angle sum of pentagon property say here this is the 540 degree, because if we join two diagonals, convert it into three triangles. First triangle 180, second triangle 180, third triangle 180. So 180 plus 180 plus 180 that is equal to 540 degree. This is the five angle sum, that is 540. 150, 110 plus 2x plus 540. Get the value of 2x equal to 280, x equal to 140 degree. This is your required answer. Okay? यस सर। Now, one more question. Question D. D is a regular polygon. D is a regular polygon with here in this polygon, this is a 1, 2, 3, 4, 5 sides. This is a regular pentagon. Regular pentagon like this. Each the side, this side, this side, this side, both are equal, and this angle we have to find. So each angle of regular pentagon are same, so each angle is x. So this angle is also x, this is also x, this is also x, this is also x. तो यहाँ लिखेंगे by angle sum property of pentagon, pentagon is equal to 540 degree. अभी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया. Now students, here x plus x plus x plus x plus x, 5 times x that is equal to 540 degree. 5x equal to 540 degree. X is equal to 540 by में 5 that is equal to 1 or 18. The value of this angle is 540, and this is the 108. 108. So Devi is your required answer. Okay. Query है मास्टर प्रियांशु जोशी, ask your question.
और अविरल कुमार, ask your question. Master Aviral. Aviral, ask your question. सर ये बाय एएसपी के लिखा है। ASP, yes. A फॉर होता है एंगल, S फॉर होता है सम, P फॉर होता है प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब इस पॉलीगन के सभी एंगल को जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए? 540 डिग्री मिलना चाहिए। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। नेम ऑफ quadrilateral, name of the polygon is the pentagon because in this polygon have a 5 sides. Okay, is that clear beta? Now students, next question for all the intelligent students. Here is a two figure. First figure like this. Question number 7. Now, in the question, here is a line. Here is a one more line, and this is one more line. Okay. Now the exterior angle is Z, and this is 90. And exterior angle X, and this is Y. Find the value of, and A, question A hai, we have to find here X plus Y plus Z. Now students, in this question here we know that a sum of all the exterior angles, because here listen, we have इन दोनों को अंदर इसमें निकालना है। दिस इज 180 माइनस Z, दिस इज 90, and here 180 minus Y, and in this property the sum of all the three angles, we get the result here by angle sum property of triangle is equal to 180 degree, 90 plus 180 minus Z plus 180 minus Y is equal to 180 degree, 90 plus 180 minus Z plus 180 minus, and the here the X is 90 minus X. X is 90, 180, because we have to find the relation between X. So here this angle is 90. So this angle is 180 minus 90. So we can rewrite here 180 minus X. So put here 180 minus X, 180 minus X. Okay, now here is equal to 180 degree. 100, 180, 100, 180 are cut gaya. 180 plus 180 is equal to X plus Y plus Z. That is equal to 360 degree. X plus Y plus Z is 360 degree. Okay, so this is a concept, but according to this concept, each and every polygon have the sum of all exterior angle is 360 degree. सभी पॉलीगन के बाहर के जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज बी 360 डिग्री। तो आप इतना न लिख करके सीधे भी लिख सकते हैं x plus y plus z equal to 360, because x plus y plus z all three are exterior angles, and we know that sum of exterior angle of any polygon will be 360 degree. Okay, so
अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हमने इसे प्रूव करके आपको दिखा दिया कि द वैल्यू इज 360 डिग्री। नाउ वन मोर क्वेरी, क्वेश्चन नंबर बी है। इन दिस क्वेश्चन there is a polygon, this is the first, this is second, and this is third, and here is a 1 2 3 4 polygon. Okay, now students, here first here is the x y z, this is x, exterior angle x, this is y, and this is z, and this is w, and here interior angle is 60 degree, here interior angle 120 degree, and here is 80 degree. So we know that sum of all the exterior angle sir, we know that ये this is y, x 60 180 w. We know that sum of all exterior angle of any polygon will be 360 degree. So x plus y plus z plus w is equal to 360 degree. हमें जो है इस क्वेश्चन को, इस क्वेरी को हमने जो है यहाँ पर सिंपल हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यस, वन मोर क्वेरी, मास्टर ध्रुव राजपूत, आस्क योर क्वेश्चन। यस बेटा। सर क्वेश्चन नंबर सर ये वाला बता दीजिए जो इससे पहले कराया आपने, सी पार्ट। सी पार्ट? यस सर। दिस क्वेश्चन? यस सर। प्लीज लिसन स्टूडेंट, 70 एक्सटीरियर है तो इंटीरियर 110 हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर लीनियर पेयर। दिस इज एक्सटीरियर इज 60, इंटीरियर 120, सम ऑफ एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल टू 180, 120 110 x 30 और x. So sum of the angle sum property of pentagon is 540 degree. हमने पांचों एंगल्स को यहाँ पर क्या किया, ऐड किया, एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 140. ओके सर। तो हम ये जो नीचे वाला है 7 का a पार्ट, यस सर हम इसके अंदर भी तो यही वाला रूल फॉलो करेंगे? हाँ बिल्कुल रूल फॉलो कर सकते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड x plus y plus z. ओके, we have to find x plus y plus z. if हम किसी एंगल को इसमें से अंदर निकालना होता तब तो हम ये काम कर सकते थे, लेकिन हमें रिलेशन के बाहर एंगल्स का, हमें बाहर के एंगल्स का रिलेशन निकालना है, सो द रिलेशन इज 360. ओके सर ये थोड़ा समझ नहीं आया। ये थोड़ा समझ आया, देखिए बाहर x है तो अंदर क्या हो जाएगा 180 माइनस x. यस सर। बाहर यहाँ पर y है तो अंदर ये क्या हो जाएगा 180 माइनस y. बाहर z है तो 180 माइनस z. तो हम जानते हैं कि अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. 180 है ना, तो 180 हमने लिखा और तीनों की वैल्यू को यहाँ पर हमने प्लस किया इक्वल टू 180. इसको सॉल्व किया है तो जो x और y z के बीच रिलेशन मिला है, द रिलेशन इज 360 डिग्री. ओके ओके सर। सिमिलरली आप इस पेंटागन में भी कर सकते हैं और चाहे जितने भी नंबर आप साइड्स हो उनमें कर सकते हैं. वन मोर क्वेरी मास्टर तेजस चौधरी. तेजस चौधरी आस्क योर क्वेश्चन. सर मैं ये कह रहा था कि सर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में किया या सेकंड पार्ट में सर कि आपने प्रूफ करके दिखाया कि x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 360 और सर इन द सेकंड क्वेश्चन आपने प्रूफ किया तो सर एक स्टेटमेंट है सर, ये तो एक स्टेटमेंट है कि सर सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं सर, तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते सर इसकी जगह इतना प्रूफ दिखाने के लिए? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मैंने यही कहा ना कि एक को मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया और एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट के थ्रू हमने दिखाया.
आप यहाँ पर स्टेटमेंट के बगैर इसको भी आप नोट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये काम किया है वैसे आप यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटर है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी इसकी 360 उसके आप आएगी, वहां ट्रायंगल था, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ 180 आएगी, तो उस हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे इसमें स्टेटमेंट लिखो, चाहे इसमें स्टेटमेंट लिखो, चाहे दोनों में स्टेटमेंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू 360 ही होगी। ओके ओके सर। नाउ मास्टर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। प्लीज सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो 7th का बी वाला है ना, हाँ तो उसे हमने 7th मतलब 7th वाले ए के जैसे इक्वेशन मतलब बनाई है वैसी करना है, या फिर आपने जैसे अभी करवाया वैसे? मैं अभी तो मैंने जैसे बताया वैसे आप अपनी कॉपी में लिख लें, और आप चाहे तो इसकी तरह उसे भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इस 7th के ए पोर्शन को भी केवल स्टेटमेंट लिख करके 360 लिख सकते हैं। ओके नाउ वन मोर क्वेरी विकास गंगवार आस्क योर क्वेश्चन। सर ये आपने सर 100x + y + z + w में सर 36 लगाया, 360 होगा सर। 360 बेटा 360 सर डिग्री। आपने सर इसमें सर ये 36 पॉइंट। हाँ 360 डिग्री। ओके सर। हाँ ओके नैतिक कुमार आस्क योर क्वेश्चन। सर जो 7 का ए का जो सर क्वेश्चन है, आप जैसे कि 180 - x 180 - z और 180 - y, तो तीनों का सम तो 360 से ज्यादा आ जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन एक्चुअल में आपके पास आप ये अननोन क्वांटिटी x y z 3 आर अवेलेबल। If we subtract 180 minus x from 180 and z from 180 and y from 180, the value is 180 degree. ओके सर। Aviral Kumar ask you question. Master Aviral, सर ask your question. प्लीज साइड। हाँ बेटा, मैं तो साइड हो गया, मुझे ही साइड। ओके सर। Ask your question. This exercise completed. ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। मास्टर अविरल कुमार, आप मुझे सुन पा रहे बेटा? मास्टर अविरल, किसी की कोई क्वेरी और है? Now students, time is over for today's class. So students,